हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी वर्ल्ड। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, सिम्टम तक पढ़ चुके थे, यानी सिम्टम क्या होता है। अब आज हमको पढ़ना है व्हाट इज साइन, यानी साइन होता क्या है, यानी साइन क्या होता है। साइन refers to any evidence of a disease detectable to a clinician। अब मेरा अगला पैथोलॉजिकल टर्म होता है डायग्नोसिस। Diagnosis. What is diagnosis? Diagnosis refers act of identifying a particular disease from its sign and symptom। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस आइडेंटिफाई करता है पार्टिकुलर डिजीज को फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम। साइन और सिम्टम के अनुसार डायग्नोसिस किया जाता है, यानी पार्टिकुलर डिजीज में। अब मेरे पास अगला पैथोलॉजिकल टर्म आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्नोसिस? Prediction of the probable outcome of a disease। Prognosis, prediction of the probable outcome of a disease। मेरे पास अगला टर्म क्या होता है? पैथोलॉजिकल प्रोसेस। अभी पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है? इंजरी या डैमेज। इंजरी या डैमेज मतलब जख्म क्रिएटेड बाय ए कॉजेटिव, क्रिएटेड बाय ए कॉजेटिव एजेंट्स। क्या हो सकता है एजेंट्स? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पॉइजन हो सकता है,
हाइपरटेंशन हो सकता है, ईटीसी। ऑन cells, tissues and organs. इंजरी या डैमेज क्या होता है? क्रिएटेड बाय ये कॉजेटिव एजेंट्स, यानी इसका कारण क्या होता है? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पॉइजन हो जाता है, या हाइपरटेंशन हो जाता है ऑन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो सेल पे, टिश्यू पे एंड ऑर्गन पे इफेक्ट शो करेगा, इंजरी, जख्म हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या होता है इंजरी के बाद? रिएक्टिव चेंजेस, या पैथोलॉजिकल चेंजेस, इसी को हम बोलते हैं। अगेंस्ट द इंजरी, फॉर एग्जाम्पल systemic hypertension, there is myocardial, hypertrophy of the left ventricle due to increase in the resistance to blood flow through the arterioles. रिएक्टिव चेंजेस क्या होता है? यानी जब इंजरी होता है या डैमेज हो जाता है उसमें चेंजेस क्या हो सकता है? अगेंस्ट द इंजरी फॉर एग्जांपल, यानी इंजरी होने के बाद क्या हो सकता है? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, दिस इज अ मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टेरियोल्स। या नोट्स क्या क्या चीज़ है पैथोलॉजिकल टर्म में? दो नोट्स है। पहला, पैथोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ what happened and how the lesion is what entire development pathogenesis is how। पहला नोट्स क्या चाहिए? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ द लेजन इज व्हाट इंटायर डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस इज हाउ।
यानी पैथोलॉजी क्या स्टडी करता है, व्हाट हैपेंड यानी कैसे हुआ, एंड हाउ द लेजन कैसे, हाउ द लेजन क्यों और कैसे हुआ, इज व्हाट इंटायर पूरे डेवलपमेंट में, पैथोजेनेसिस इज हाउ यानी ये कैसे डेवलप किया इसके बारे में अध्ययन करता है। अब मेरे पास दूसरा नोट्स है, नेसेसरी टू नो पैथोजेनेसिस of lesions in order to make a rational judgment for treatment, control, and prevention of disease.